So I hope today we are going to watch multiple videos as well. So I want you to stay attentive today. We were studying about separation of mixtures, but I knew that it was a very difficult for you to understand. For that purpose, we will be watching some videos for the experimentation thing. Okay? Uh, we studied about filtration, but I will be repeating it again. Beta, as you know that the individual substances in a mixture can be separated using different methods depending on the type of mixture. These methods include filtration, evaporation, distillation, and sublimation. We will be studying all of these separating mixtures, the techniques for the separating mixtures one by one. As we know that mixture is just a physical combination of two or more things, right? Whereas the compound is formed by undergoing a certain chemical reaction, a certain chemical bonding, ठीक है? उसमें electrons की involvement होती है. We will be studying about that later. उसमें electrons की involvement होती है जिसकी वजह से compound बनता है. तो it is very much uh, you know difficult to separate it by the physical means, to separate the compound by the physical means, but a mixture can be separated. हम filtration के बारे में पढ़ रहे थे. It is a process in which insoluble matter is separated from a liquid. It is a separation process in which a mixture is passed through a filter paper that allows one component to pass through but blocks other component from passing through because of its matter and consistency. Mixtures can be separated into their respective constituents. For example, mixture of mud and water can be separated through filtration process easily because water being liquid will pass through the filter paper easily, but the mud will not of be as it is being as it is solid. ठीक है? तो हमने filtration का process देखा. Last class में भी we have this beaker glassware. ठीक है? एक beaker type of thing होती है, एक बर्तन सा होता है, you can call it. इसके साथ एक stand होता है, this one, जिसके साथ एक wooden block attach है. ठीक है? इसके अलावा we have this, इस स्टैंड के अंदर बेटा फिल्टर फनल लगी होती है. क्या लगा होता है? फनल, FUNNEL. एक फनल लगी हुई है. ये जो फनल होती है इसके साथ फिल्टर पेपर भी लगाया जाता है, जो कि एक उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोर्स होते हैं. ठीक है? वो पूरा सा मटेरियल होता है जो इसके साथ अटैच किया जाता है. अगर आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें से आपने कोई चीज़ सेपरेट करनी है, थॉरली सेपरेट करनी है, जैसे कि वी हैव सैंड एंड वाटर मिक्सचर. ठीक है? आप इसके अंदर पानी लेते हो, आप इसके साथ मिट्टी मिक्स करते हो. जब आप इसके साथ मड मिक्स कर रहे हो, उसको आप पास कर रहे हो फनल के थ्रू, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स जो कि फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते और उसके बाद फनल से नहीं गुजर सकते, वो ऊपर रह जाते हैं. उनको हम कहते हैं रेजिड्यू. लेकिन जो फिल्ट्रेट होता है बेटा, द लिक्विड थिंग, ठीक है, जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है. ठीक हो गया? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज रिटन ऑन योर बुक. During filtering, the mixture is poured into a filter paper held in a funnel. The filter paper is full of tiny holes and acts like a sieve. Sieve बेटा स्टेनर को कहते हैं. जैसे आपने कभी टी बनाते हुए, सीव ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं. ठीक है? कभी आपने टी बनाते हुए उसको यूज किया होगा स्टेनर को, राइट? The large particles of the solid are too large to go through the tiny holes and are left in the filter paper as a residue. यहाँ पर इस portion में they are left. The smaller particles of liquid pass through and are collected as the filtrate. In this way, insoluble solid and the liquid are separated. इनसॉल्युबल का मतलब होता है समथिंग जो डिसॉल्व नहीं हुई होती. जैसे कि हमें पता है कि मिट्टी हो, ग्रेवल्स हो, इवन सैंड के जिस तरह के भी पार्टिकल्स हैं वो मड के साथ मिक्स नहीं हुए हुए, सॉल्युबल नहीं हुए हुए. ठीक है? तो वो ऊपर रह जाते हैं. वेयर एज द लिक्विड इज सेपरेटेड एंड इट इज कलेक्टेड एज फिल्टरेट. Filtering can be used to separate sand and water or chalk and water. It cannot be used to separate salt and water. ठीक है? अब देखें, हम देखते हैं कि जो मड के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर लार्ज इनफ. चौक के पार्टिकल्स जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, दे आर लार्ज इनफ, प्लस वो पानी के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. ठीक है? पानी ने उनको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करना. ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे शुगर है, जैसे कि सॉल्ट है. ठीक है? ये पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा.
ठीक है, या पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से ये हमें नजर भी नहीं आते, और जब आप इन्हें फिल्टर पेपर से पास करते हो तो ये पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड के साथ डिसॉल्व नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो सॉल्ट एंड वाटर की सेपरेशन फिर कैसे होगी। ठीक है, हम उनको भी देखेंगे कि सॉल्ट और वाटर जो है, अगर वो एक दूसरे के अंदर सोलुबलाइज हो गए हैं, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो गए हैं, तो अगर हमने उनको सेपरेट करना है तो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो मिक्सचर्स की सेपरेशन पढ़ रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर भी एक मिक्सचर है। तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, हम उनको अलग मेथड्स के थ्रू सेपरेट करेंगे, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। फिल्ट्रेशन से बेटा वो चीज़ें सिर्फ सेपरेट होती हैं जिनका पार्टिकल साइज भी बड़ा होता है और जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं हुई होती, जो लिक्विड में हल नहीं हुई होती बेसिकली। सो वी आर गोइंग टू जब हमारी साइंस एग्जीबिशन हो रही थी तो हमने हुसैन ने और उसके सारे ग्रुप ने, अमूज ने, आई रिमेम्बर एवरी बॉय, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था फॉर द वाटर फिल्ट्रेशन एंड वी परफॉर्म दैट इन द क्लास एज वेल, राइट। तो बेटा वो भी एक फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल थी, जिसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें इंसर्ट की थी और ऊपर से हमने गंदा पानी फेंका था और काफ़ी बेहतर पानी हमें नीचे बीकर में मिल गया था। So we have studied up till now the everyday uses of filtration plus the filtration on the large scale. ठीक है, टी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज हुआ, कार में यूज होता है, वी आर यूजिंग मास दैट आर आल्सो एग्जिबिटिंग दैट प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसी तरीके से बेटा लार्ज स्केल में वाटर फिल्टर्स में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए वी आल्सो यूज द द फिल्ट्रेशन थिंग, राइट। So moving on forward, we are going to study a very other important topic which is about evaporation. Evaporation बेटा हम रेगुलर देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कब कब evaporation हो रही है। Evaporation is what? Evaporation is when a liquid slowly changes to gas over time. Mud puddles. Drying up in the sunshine is also an example of evaporation. ठीक है, the water leaves the puddle while the dirt stays behind. Boiling water on a stove is an example of evaporation happening much faster. The more heat that is added to the solution, the faster the liquid will change to a gas. If a pot of a solution like tomato soup or any soup was left on a stove to boil, very soon all the water will boil away and the solids will left, ठीक है, सॉलिड्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग मी। एवेपोरेशन इज ग्रेट फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर, ठीक है। एवेपोरेशन जैसे कि हम सारे टेक्निक्स ऐसी पढ़ रही हैं जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होती हैं। वी हैव सोल्यूट, वी हैव सॉल्वेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट right now. In the last topic we studied about filtrate and residue. They were new to us, right? Even funnel filter paper, that were also new, but the terminologies like filtrate and residue were new. Similarly, the terminologies solute and solvent must also be new for you. ठीक है, सल्यूट बेटा ये होता है जो सॉलिड पार्टिकल होता है जिसको आपने डिसॉल्व करना होता है, जो कि लेसर अमाउंट में लिया जाता है। सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादातर लिक्विड होता है जिसको हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। तो सल्यूट जो है ये कम अमाउंट में लिया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट के साथ। वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एवरीडे मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड water. Sugar in that case is taken in a very small amount and it is solid, right? तो इसको कहते हैं सल्यूट, वेयर एज द वाटर विच इज टेकन इन ग्लास इट इज सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, प्लस दैट्स लिक्विड। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है। सोल्यूट का समझ आ गया, सॉल्वेंट का भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। द सोल्यूशन कंटेनिंग द डिजॉल्व सॉल्ट, इधर सॉल्ट की एग्जांपल ली गई है जैसे कि मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी है। द सोल्यूट इज poured into evaporating basin and heated gently. Eventually, all the liquid, the solvent evaporates, leaving the salt behind. The salt form crystals in the basin. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी हम एक चीज वीडियो भी देखेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं, जिसमें से वाटर जो है बेटा वो evaporate हो जाता है, इट इज टर्न इनटू वेपर्स एंड देन इट गोज टू द स्काई, राइट। लेकिन जो बेटा हमारे पास जो सोल्यूट होता है, फॉर एग्जांपल इफ इट्स सॉल्ट और वाटर, इट विल स्टे बिहाइंड इन द पॉट, ठीक हो गया। तो इस जैसे कि फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, वैसे हमने evaporation की भी बहुत एग्जांपल्स देखी, देखते हैं
Evaporation is also used to concentrate liquid food such as noodles and make condensed milk, the product of a process that removes water from the milk. Similarly, जो medicinal company हैं, they also use evaporators to remove moisture from drugs. ठीक है? In fact, one way to produce table salt is to evaporate saline water in evaporation ponds, a technique which is used by the people for thousands of years. Sea water, you can see the image on your slide as well as on your books. Sea water contains other valuable minerals that are easily obtained by evaporation. So large scale use of evaporation is in some parts of the world where salt is obtained by evaporating seawater trapped in a large shallow salt pans. The salts, these are the pans, right? The sun heats gradually evaporates the water, leaving the salt behind. ठीक है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी जो है सी वाटर जो है बेसिकली वो evaporate हो जाता है, और सी वाटर एज वी यू नो इज salty, उसके अंदर काफी नमक होता है, तो जो salt है that is left behind. This is then raked up in piles to dry. Okay, so again, sublimation is the term for when matter undergoes a phase transition directly from a solid to gaseous form or vapor without passing through the more common liquid phase between the two. Okay? It is a specific case of vaporization. Sublimation refers to a physical change of transition. Basically, we know that there are three states. Gas, okay, gaseous state है, then we have solid state, and then we have liquid state. जब आप सॉलिड को, अगर हम आइस की एग्जांपल लेते हैं, जब हम आइस को हीट अप करते हैं, राइट, आइस पहले क्या होता है, लिक्विड में टर्न होता है, राइट, इट इज टर्न इनटू वाटर, और वाटर के बाद जब उसको हम और हीट करते हैं तो फिर उसके वेपर्स बनते हैं, वो गैशियस फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है, राइट। लेकिन बेटा सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। जो सॉलिड है इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, जो आपकी फ्रीजर में भी होती है। सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन बिटवीन द सॉलिड एंड द गैसियस फेज ऑफ मैटर विद नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज, एज वी नो. For those of us interested in the water cycle, sublimation is the most often cause used to describe the process of snow and ice changing into water vapor in the air without first melting into water. Okay? Without melting into the water, the solid, the snow, the ice is directly changed into gas. Dry ice is frozen carbon dioxide. A block of dry ice has a surface temperature of minus 78.5 degrees. Minus 78.5 degrees. Oh my god, it's too cool. Dry ice also has a very nice feature of sublimation. As it breaks down, it turns directly into carbon dioxide gas, okay, rather than a liquid. The super cold temperature and the sublimation feature make dry ice great for refrigeration. For example, if you want to send something, frozen across the country, you can pack it in dry ice. It will be frozen when it reaches its destination, and there will be no messy liquid left over like you would have with normal ice. बेटे कुछ रेफ्रिजरेटर्स में ड्राई आइस यूज होती है, ठीक है, नॉर्मल आइस नहीं यूज होती। अगर आप एक चीज नॉर्मल आइस में पैक करते हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल आइस में पैक करके उसको कहीं भेजनी है आपने, फॉर एग्जांपल आपने थोड़े डिस्टेंस पे भेजना है, तो इट विल मेल्ट, ठीक है, लिक्विड सारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी होता है। लेकिन कहीं पर ड्राई आइस भी यूज होती है। ड्राई आइस में क्या होता है, जो आइस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, मेस नहीं क्रिएट होता, ठीक है। अगर आपने किसी को कोई चीज बेचनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज ड्राई आइस, इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस, ठीक हो गया। Pure iodine is also the example of sublimation. Iodine is heated in a beaker to cause the iodine to sublimate. The iodine vapor formed in a beaker can undergo deposition in the walls of the beaker and are on the round flask filled with ice water on the top of the beaker. We will be watching a video. Wait a second.